Is alkynes. Alkynes are unsaturated hydrocarbons that are having carbon-carbon triple bond. Previously, we were seeing the molecules with carbon-carbon single bond, double bond. Now, in this topic, we are going to study the carbon-carbon triple bond compounds, that is unsaturated hydrocarbons with carbon-carbon triple bond. So, this has a general formula CnH2n minus 2. Since the four carbons from these are removed from this alkanes, that's why this is 2n minus 2. जैसे alkanes में 2n plus 2 होता है, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर और फोर कार्बन्स होते हैं. ये फोर कार्बन्स आर removed due to two pi bonds for the formation of two pi bonds. So that's why we are it is having a general formula CnH2n minus 2. Okay. For the first example of this type of compound is acetylene, that is ethene molecule, we can say. Then let us see some of the applications of this compound. So they are applied as a rocket fuel. They are applied as making some organic compounds and solvents. अब ये compound की एक speciality होती है कि ये भी exothermic होता है and it releases a high amount of heat. That's why for जहाँ पे भी high amount of energy या heat की requirement होती है, at that places we can use these compounds. Okay. So basically these compounds are used that way as a rocket fuel, क्योंकि rocket में बहुत ज़्यादा energy लगती है to make it movable. So इसलिए इसको rocket fuel में welding और cutting के लिए जब हम आप देखते होंगे welding cutting के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें से एक लेजर टाइप होता है जिसमें से हाई एनर्जी निकलती है, स्पार्क्स निकालते हैं. तो ये जो वेल्डिंग कटिंग टूल होता है इसमें भी हम हाइड्रोकार्बन्स, ये इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स दैट इज acetylene को यूज करते हैं. ओके, देन that is made for making organic compounds and solvents. They are used for making polymers. They are also used for ripening of food, artificially ripening of food. ये जो हम आजकल देखते हैं ना कि फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाया जाता है, सो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूज फॉर दिस आर्टिफिशियली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. Then it is used for portable lights. Then polythene bags, they are polymerized to form a polythene bags. Then it is also an anti-tumor agent. जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर को रिमूव करने के लिए दिस इज एंटी ट्यूमर एजेंट. दैट्स व्हाई इट कुड बी यूज्ड फॉर एंटी ट्यूमर पर्पस आल्सो. So let us see the nomenclature of this acetylene, or maybe you can see ये जो compounds होते हैं इसका nomenclature. Again we are divided the nomenclature of these compound in two system as we do always. The first system is the common system. In common system what we do, we count the number of carbon which is present in the molecule, and according to that number of molecule we name the system लाइक इन अल्केन्स एंड अल्कीन्स. बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेस कंपाउंड लेते हैं एसिटिलीन. वी ऑलवेज कंसिडर this compound as acetylene. So acetylene is this compound that is carbon carbon triple bond with both the carbon having one hydrogen. तो ये जो compound होता है इसको acetylene बोलते हैं common name है. But what we do, the other compounds are regarded as the derivatives of these acetylene. जैसे हम इसको थ्री compounds है तो हम इसको अलग नाम देते हैं. फोर कार्बन्स है तो इसको अलग नाम दे देते हैं अल्केन्स अल्कीन्स में. बट इसमें क्या होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन. तो हम हर एक को एसिटिलीन ही नाम देते हैं, बट इस कार्बन के साथ जो भी अटैच है उसको एज अ अटैचमेंट हम इसको अज्यूम करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिथिल एसिटिलीन. अब इसमें दो मिथिल ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज डायमिथिल एसिटिलीन. In this there are again this group, that is propyl group is attached to the one of the carbon, so we name it as isopropyl acetylene. Isopropyl इसलिए क्योंकि ये branched है. अगर ये straight chain होता
तो एन प्रोपिल बोलते हैं। तो ये ब्रांच्ड चेन है, इसलिए वी कॉल्ड इट एज आइसोप्रोपिल. Okay, so this is isopropyl acetylene. Similar, we can use the nomenclature in the common name system. Then the second type of nomenclature, which is more acceptable, is IUPAC system. So this in this IUPAC system, what we do again, we see the longest chain compound, whatever the longest chain compound is this. Like in this is a single chain, this is a single chain, this is a single chain. But then in the fourth compound, you can see this is not a single chain, that is a branched chain. So those जो straight chain है which includes this triple bond, उसको हम parent compound लेते हैं, और बाकी जो भी है उसको हम branches consider करते हैं. सो इन आईयूपीएसी सिस्टम जो अल्केन्स मॉलिक्यूल होता है, अल्केन्स में जो हम आखिरी में ए एन ई अटैच करते हैं, तो इस ए एन ई को हम रिप्लेस कर देते हैं वाई एन ई से, दैट इज ईन. Okay, so these compounds are ends with ene, that is ethylene, ethene, propene, butene, like this. Okay, so we take the longest chain compound like this. In this chain there are two compound, तो ये अल्केन का डेरिवेटिव है, सॉरी इथेन का डेरिवेटिव है, तो इथेन के बदले हम इसको इथाइन बोलते हैं. Okay, since it has having three that means triple bond compound, so we call as an ethyne. Then this is a compound again with three carbons are there, so we usually alkanes के regards में हम इसको propane बोलते हैं, तो propane के बदले हम इसको propyne बोलते हैं क्योंकि इसमें triple bond आ गया. Again this is a 4 carbon compounds, we called it as 2-butyne because it has 4 carbons. Now again this is a 5 carbon compound, बट हम इसको 5 कार्बन कंपाउंड नहीं कंसिडर करके हम इसको 4 कार्बन चेन कंसिडर करते हैं, एंड वी कॉल्ड इट एज, जो भी अटैचमेंट है इसको हम अलग से नाम देते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाइन. ओके, एंड दिस, अब इसमें आता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस पोजीशन पे है, ये भी हमको बताना पड़ेगा. जैसे ये कंपाउंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, तो हमको बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है. सो दिस इज एट द सेकेंड कार्बन, सो वी नेम दैट एज 2-butyne. अब इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है, the triple bond is at first position, so this is 1-butyne, but one CH3 group is also attached at the third position, that means at the third carbon. अब third carbon कैसे, हम वहां से काउंट करना शुरू करते हैं जहां से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होता है. तो ट्रिपल बॉन्ड इधर साइड से नियरेस्ट है, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, दैट इज 1, 2 and 3. So at the third carbon we are having a methyl group attached. So this is called as 3-methyl-1-butyne. Okay. Then the next is the structure of acetylene. In the previous chapter, that means in first unit, we have already studied this chapter, structure of acetylene. अब ये जो structure of acetylene है, इसमें क्या होता है? We have triple bond between two carbons. Okay. अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो आउट ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड ओनली one bond is a sigma bond and the two bonds are pi bonds. अब हर एक कार्बन की बात करते हैं. अगर मैं एक इंडिविजुअल कार्बन की बात करती हूँ, we have 2 carbons in this acetylene. So if I talk about a one individual carbon, so that carbon is having 2 sigma bonds, that is carbon is having sigma bond with one of the hydrogen and a carbon is having sigma bond with अदर कार्बन. ओके, एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक दूसरे कार्बन के साथ बनाता है, तो दे आर हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड. ओके, तो ये और दो जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं. तो वी हैव स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ hybridization. In the concept of hybridization, we have seen the hybridization occurs only for sigma bonds, not for pi bonds. So अब ये दो ही अपने को सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, तो सिर्फ two orbitals will form a hybrid orbital. It will undergo hybridization by only 2 orbitals, and remaining 2 orbitals will
be as it is for formation of pi bonds. Okay, तो अब ये जो दोनों ऑर्बिटल्स है दे मिक्स टुगेदर, दैट इज वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए. और ये जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक बनाता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और दूसरा बनाता है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड. अब ये जो होता है ये दोनों दूसरे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन we talk the bond angle is 180, that is the molecule is a linear molecule. Okay, so अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इस तरीके से होता है. दैट मीन्स दिस हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल. इसको तो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये इनर मोस्ट है. देन ये जो है ये है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1p and other p, and one of the p orbital is empty. So when it comes in contact with एनी ऐसा कोई भी रिएक्टेंट के जब कांटेक्ट में आता है तो ये जो कार्बन होता है इट गोज इन द एक्साइटेड स्टेट. अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या करता है ये इस तरीके का फॉर्म हो जाता है. दैट मीन्स 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स आर फॉर्म्ड. ओके, 4 लोन पेयर्स फॉर्म्ड हो जाता है एंड आउट ऑफ दिस 1s and 1p mix together to form 2 hybrid orbitals. And this one, अब एक sp जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और दूसरा sp जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे कार्बन के साथ. और बाकी जो दोनों रिमेनिंग है ये भी उन दो उसी जो सेकेंड वाला कार्बन है उसके साथ 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. ओके, सो इन दिस वे 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 pi bonds are formed by each of the carbon. Okay, so you can see this is the structure. ये आप देख सकते हैं 2 carbons are there, they are attached with 1 sigma bond and both the carbons are attached with a sigma bond along to the hydrogen. Okay, 1 sigma bond with this hydrogen and other carbon is forming a sigma bond with the other hydrogen. As well as this is a pi bonds. You can see हम जो ये pi bonds होता है इसको इस तरीके के cloud से दिखाते हैं. So this is a cloud for 1 sigma bond and this is a parallel cloud. This is a perpendicular cloud for other sigma bond. Okay, so these are 2 perpendicular clouds for the pi bond. So you can see this हम जो sigma bond consider करते हैं तो ये जो है ये one single line में आता है. So this is a linear structure. Okay, so acetylene is having a linear structure. So we can see this. So due to some unhybridized each carbon use 1 hybrid orbital to form sigma bond with adjacent carbon and 2 hybrid orbital of sigma bonds with 2 hydrogen atoms. Okay, the unhybridization 2pz orbital of 2 carbon atoms are parallel to each other, so they are sideways or lateral in manner. Okay, so due to sp2 hybridization the molecular plane of H जो HCH, okay, this is not countable, इसको छोड़. So let us talk about some preparations of these acetylenes. So these can be prepared by first of all the calcium carbide. Calcium carbide क्या होता है? This is CaC2. This is called the calcium carbide. When it is treated with a water molecule, it gives calcium bicarbonate as well as acetylene molecule. And the second preparation is methane. From methane, the methane gas obtained from natural gas have subjected to partial combustion gives acetylene. अब ये methane gas जो है इसको partial जब हम combustion करते हैं तो it gets attached with each other. जो दो कार्बन से ये attach हो जाते हैं and it gives acetylene. Okay, so after the partial oxidization it forms a acetylene molecule. Then the third one is vicinal dihalides. So two dihalides on treated when treated with this KOH molecule. Okay, this reaction is called as dehydrohalogenation. अब D मतलब निकलना. Okay, जहाँ पे भी हमने D word लगा दिया DED
इसका मतलब कोई चीज बाहर निकल रही है मॉलिक्यूल से। अब क्या बाहर निकल रहा है, ये वर्ड इटसेल्फ शोज दैट डिहाइड्रो, मतलब एक हाइड्रो निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है, हेलोजिनेशन, दैट मीन्स डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। दैट मीन्स इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये जो वेसिटल डाइहेलाइड्स है, इसमें क्या होता है, दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच है, तो one of the halogen groups form combined with one hydrogen and other bromine molecule gets combined with other hydrogen. So this is forming HBr and this is also forming HBr. And after breaking of these bonds, after this elimination, these two carbon carbons forms a triple bond, that is acetylene molecule. तो इस तरीके से हम एक acetylene molecule को form कर सकते हैं। Okay, then the next preparation is Kolbe's reaction. So this is also very important naming reaction. So this potassium fumarate is electrolyzed in aqueous solution to form a acetylene at the anode. एनोड पे अब जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पोटेशियम फ्यूमेरेट को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एनोड पे हमको मिलता है एसिटिलीन। ओके, सो टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें लास्ट स्टेप में हमको एसिटिलीन मॉलिक्यूल मिलता है। देन द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम हेलो फॉर्म। अब हेलो फॉर्म मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसको हम हेलो फॉर्म बोल रहे हैं। तो अब क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया, दिस इज वन क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज अदर क्लोरोफॉर्म। जब हमने इसको सिल्वर मेटल से ट्रीट किया, okay, when we use the silver metal for the catalysis of this molecule, it gives Cl जो है, that is chlorine. Chlorine has been absorbed by this Ag and this chlorine is also get reacted with this Ag. तो इस तरीके से ये पूरा जो रहता है ये AgCl बन जाता है, और इसके अलावा ये जो दोनों कार्बन्स होते हैं they attach with each other with a triple bond. Okay, so this gives acetylene molecules. अब इसमें भी वैसा ही होता है, दिस इज आइडोफॉर्म, सेम रिएक्शन है आइडोफॉर्म के साथ। आइडोफॉर्म मतलब CHI3। अब इसमें भी आयोडीन जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट हो जाता है टू फॉर्म्स AgI एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज acetylene molecule. Now let us see the chemical reactions of this acetylene. So first chemical reaction is the hydroboration reaction. अब हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरेन्स के साथ रिएक्ट हो रहा है। ओके, सो वर्ड itself show that it is getting react with a hydroboration, that means बोरेन्स के साथ। So acetylene get react with this बोरेन्स। ओके, बोरेन्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर आता है जिसको हम बोलते हैं अल्कीन बोरेन। Okay, so this product is formed, then this product is again reacted with hydrogen peroxide in the presence of some alkali in this is also reacted to form a acetanilide and vinyl alcohol. अब ये जो vinyl alcohol और acetylene होता है, they are in equilibrium to each other due to a ketoenol tautomerism. Okay, so they are in equilibrium to each other. Then the next reaction is polymerization. As we have already studied about the polymerization reaction, when the reactions combine with each other, the chains combine with each other to form a long chain, that is called as polymerization. तो अब ये जो acetylene होता है ये भी एक दूसरे से connect होते जाता है, that means this C connects with the carbon of other molecules, they go on polymerizing to form different compounds. Okay, तो ये जो है ये vinyl acetylene हो गया और ये हो गया divinyl acetylene, that means the position is different. जो ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन है दिस इज डिफरेंट। सो दिस इज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन इज द थिंग व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन, व्हेन टू डाइमर्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड विद टू डबल चेन। ठीक है, जब दो कंपाउंड अटैच होते हैं तो हम उसको डाइमराइजेशन बोलते हैं। और जो एक सिंगल मॉइटी होता है जो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विच वी आर यूजिंग फॉर द पॉलिमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर। Okay, so two monomers combine to form a dimer. Now three monomers combine to form a trimer, that is this is reaction is called as trimerization, that means three acetylene molecules combine to each other to form a benzene. Okay,
तो ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स है, they are passed through a red hot tube and it forms a benzene molecule. Then the next is tetramerization. Tetra means four. That means four monomers combine to each other to form this eight-membered ring. This is called as cyclooctatetraene. Okay, so this is all about the polymerization reaction. Then we have third type of reaction, that is oxidation reaction. In oxidation reaction, these alkynes on oxidation give different product according to different type of oxidizing agent we are using in it. So first of all, the oxidizing agent which we are using in it is alkaline KMnO4. In alkaline KMnO4, it gives oxalic acid. ओके, ये जो अल्कलाइन KMnO4 है और अल्कली के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये COOH ग्रुप बना लेते हैं। दैट मीन्स COO two carbons, two oxygens can combine with each of the carbon to form this carboxylic group. Then this compound is called as oxalic acid. Okay. Then the second type of oxidation is oxidation by acidic KMnO4. अभी हमने alkaline KMnO4 देखा, अभी हम देखेंगे acidic KMnO4. अब acidic KMnO4 क्या होता है, इसमें acetylene जो molecule है, this is combining with KMnO4 along with a H plus ये होता है, and in presence of the atmosphere as well as water, we get this compound, that is 2H2COH. Okay, combine ये होता है intermediate which again forms a carbon dioxide and water molecule. Okay, then the third type of oxidation is with K2Cr2O7 in acidic medium. Okay, so ये जो K2Cr2O7 है, इसके साथ जब ये acidic medium में react करता है तो ये CH3COOH, ठीक है। And the second type, fourth type of oxidation is from selenium dioxide. So this is also selenium dioxide के साथ ये जो oxygen react करता है, so it forms a glycoxide. Then the next one is metal ammonia reduction. This is very important to note that this is a new point which is covered in the syllabus. आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है, सॉरी आपके बुक में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के. दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस राइट नाउ. ओके, सो यू हैव टू कवर दिस सिलेबस, टेक अ पिक्चर, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस टॉपिक, और मे बी यू कैन प्रिपेयर इट बाय सम अदर स्टैंडर्ड बुक्स और मे बी फ्रॉम इंटरनेट. ओके, सो टेक दिस स्नैपशॉट. This is a reduction of acetylene to transalkenes by using sodium and ammonia. Okay, so this is proceeded by a two-step process. This one sodium and one ammonia is used for this. So अब ये क्या करता है, this one of the carbon is attached. ये जो कार्बन जा रहा है, ये one of the carbon is attached with this part and other carbon, other hydrogen attached to this part. Okay, so this forms a trans compound. अब ये trans compound क्यों बनाता है, क्योंकि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जब हम इसको एक्साइटेड फॉर्म में ये करते हैं, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसको ये जो कंपाउंड है इसका स्टेबिलिटी डिफरेंट होता है. मतलब ये जो सिस कंपाउंड है दिस इज लेस स्टेबल एंड ट्रांस कंपाउंड इज मोर स्टेबल. ऑब्वियसली अगर वो सिस में आएगा तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो अटैचमेंट्स भी होंगे वो ट्रांस पोजीशन पे होंगे. Okay, so that's why this trans compound is more stable than this cis compound, and that's why it attaches two hydrogen attaches in the trans position. That means opposite, एक इधर side तो एक इधर side attach होता है. Okay, so this is called as metal ammonia reduction. Then let us see the acidic nature of alkynes. अब ये acidic क्यों होता है भैया, ये तो हाइड्रोकार्बन है तो ये acidic क्यों है. तो हाइड्रोकार्बन होने के बाद भी ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो कार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. तो जब हम इसको कोई भी मॉलिक्यूल को हम
हीट करते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो ये प्रोसेस करने के बाद जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इसमें, ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है वो यहाँ से होता है। दैट मीन्स सी एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और सी एच बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये एच जो है ये एच प्लस करके बाहर आ जाता है। ओके, तो ये जब हम रिएक्शन देखते हैं, ये सोडियम और अमोनिया के कांटेक्ट में आके ये जो कंपाउंड है ये इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, विच फॉर्म दिस सी एन सी सी ट्रिपल बॉन्ड अलोंग विथ टू Na molecule, that is sodium molecule which is attached to this. Okay, अब ये H प्लस, हम एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड मतलब H प्लस, जो भी कंपाउंड H प्लस रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, इन द सिंपल सेंस। ओके, सिंपल सेंस में हम क्या बोलते हैं, H प्लस रिलीजिंग कंपाउंड्स आर एसिड। अब क्या होता है भैया, ये H प्लस निकल रहे हैं। अब H प्लस क्यों निकाल रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो H प्लस निकालता है, H प्लस करके निकल जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यही पे कार्बन के पास ही छोड़ के चला जाता है। अब ऐसे क्यों, अब sp जो है रहता है, दिस कार्बन इज 50% s कैरेक्टर एंड 50% दैट इज 50% p कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑन बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है इसके साथ ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। दैट मीन्स ये जो sp है, ये जो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके बीच में, एक हाइड्रोजन ने दिया एक कार्बन ने दिया, तो ये जो है इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। अब उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ा है, तो जब हाइड्रोजन जाना चाहता है उसके पास से, तो उसको बेचारे को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाना पड़ता है, तो ये H प्लस हो जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये H प्लस हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, तो अब ये क्या बन गया, दिस फॉर्म्स अ कार्बो, ये आयन बन जाता है। ठीक है, बट ये आयन बनने के बाद क्या होता है, ये नेगेटिव आयन हो जाता है, और प्लस इसके पास, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं है हम बोलेंगे। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये जो मॉलिक्यूल है ये नेगेटिव बन के निकलता है, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव में निकलता है, तो it becomes a H plus molecule. So due to the release of H plus molecule from acetylene, this compound is called as acidic compound. Okay. The next topic is oxyacetylene flame. When we required a high temperature for maybe welding purpose, for cutting purpose, and for soldering, etc., we need a very high temperature. We need a fuel which gives a very high temperature on combustion. So in this case, we use acetylene molecule as a fuel, because when acetylene molecule burns in the presence of oxygen, it gives a very high temperature. That is, it gives the temperature above 3000 kelvins. So this is called as oxyacetylene flame, because acetylene is burned in the presence of oxygen. So when oxygen combines with acetylene, it gives carbon dioxide as well as water molecule, and it gives a very high energy. That is, it's a highly exothermic process, and that's why it is used for welding, cutting, soldering process. You can see this flame you have seen while you have seen the welders. There is a pipe with a high amount of heat is releasing from that, with very heavy flame is released for the cutting of that metals. You must have seen a flame like this. So it gives sparks and heavy sparks and heavy flame which cuts and which molds these metals easily. So that is called as oxyacetylene flame. So let us. So this is all about the topic.